ठीक है, तो कल हमने क्या बात किया था बेसिकली, in the section of geography we have talked about basically that how the time is calculated, and I have talked about basically so what we know, the basic understanding we have, these are the latitudes, okay, and these are the longitudes. So the horizontal lines are the latitudes, and these vertical lines are the longitudes, and these longitudes play a very significant role in calculating the time. ठीक है ना, तो टाइम को कैलकुलेट करने में दिस हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड व्हाट आई टोल्ड यू कि इफ दिस इज द होल अर्थ, सो दिस अ मिड लाइन एट 0 डिग्री longitudes, what we say 0 degree longitudes, है ना, the way we say this is the 0 degree latitude as the equator. The 0 degree latitude we say it as the equator. In the same manner, the 0 degree longitudes, what we say it as the prime meridian. And what I told you in the yesterday's class, as we are moving away from the prime meridian, ठीक है ना, will move forward in time, will move forward in time. For example, सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुबह के 6 बजे हैं, तो यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो सुबह के यहाँ पे 10 बज जाएगा. ठीक है ना, ये ऐसे कुछ कैलकुलेट होगा. एंड वाई इट इज हैपनिंग, आई हैव एक्सप्लेन द रीजन ऑल्सो, बिकॉज दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, एंड द अर्थ इज मूविंग फ्रॉम west to east. The earth is moving from west to east, and I told you only two planets are there, UV, which rotate clockwise, means east to west. Rest rotate the west to east. Clear? So whatever the whichever country is there in the eastern side will definitely gain the time. और उसके बाद टाइम कैलकुलेट कैसे किया था, मैंने कहा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट. सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 15, सो दिस विल बिकम 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 फोर जा 15 के 60 मिनट, मीन्स 1 आवर. सो दिस इज द ओवरऑल, है ना, टाइम डिफरेंस निकालते हैं ऐसे. नियर अबाउट हमारा जो इंडिया का IST है, यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया का जो IST है, दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो जाता है 82.5 से. ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे है, दिस इज IST 82.5 से. एंड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन दिस इज 5 क्वार्ट 5 1/2, 5.5 घंटे आगे है. ठीक है ना, अमेरिका से बात करोगे न्यूयॉर्क से, तो हमारा टोटल टाइम लगभग 9.5 10 घंटे पड़ जाता है. तो दिस इज दीज थिंग्स आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रॉपरली. ठीक है ना, और आई हैव टॉक्ड अबाउट की ओवरऑल द डिफरेंस बिटवीन द किबीथू और गुजरात का गुहार मोती, करीबन 2 सवा 2 घंटे का अंतर है उन दोनों के बीच में. IST की बात किया था, इंटरनेशनल डेट लाइन. सो वाई इट इज एग्जैक्ट इन द मोशन, बिकॉज वी डोंट वांट की एट अ पर्टिकुलर आइलैंड व्हाट हैपन कि उसमें दो डेट्स हो जाएं. ठीक है ना, तो हम एक ही डेट चाहते हैं, सो दैट इज द रीजन. क्लियर? So these are the things where I talked about in yesterday's class about the rotation and revolution. ठीक है ना, रोटेशन मीन्स अपनी जगह पे मूव करना, दैट इज रोटेशन. एंड रेवोल्यूशन मतलब किसी चीज के अराउंड मूव करना, दैट इज द रेवोल्यूशन. एंड रेवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन इज आल्सो देयर. क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन व्हाट हैपेंस, द डे एंड नाइट हैपन बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन. ये थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये ठीक है, पता है, सब पढ़ चुके हैं. So because of the revolution, what happens? This the seasonal change in season happens. ठीक है ना, इस बात किया था. In the yesterday's class, I talked about the perigee and apogee. है ना, perigee P से perigee, P से perihelion, P से pass. तो sun और earth जब पास होंगे तब वहाँ that the world is known as the perihelion. And when the sun and earth are at a larger distance or away from each other, उसको बोलते हैं aphelion. Clear? In the same manner, two words are also important. Was one is the perigee, second is the apogee. P say pass. So this is regarding the moon. If the moon and earth are very close to each other, this is perigee. And if the moon and earth are very far from each other, this is the apogee. ठीक है ना, तो these are the two conditions. Then this was the concept जो मुझे बताना था, थोड़ा बता भी दिया था. इसको रिवाइज करते हैं. What I told you, basically this is the sun, and earth is revolving, not rotating. Rotate भी करता है. While moving, earth also rotate on its own axis at 23.5 tilted, and having the shape of geoid. Clear? So it is also tilted, but simultaneously it is also revolving around the sun. तो rotate भी कर रहा है, revolve भी कर रहा है अपनी position पे. ठीक है ना? So this is it. Now at this time means near about 21st of June, or for example, I shouldn't say the 21st of June. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि at this position, which position, इस पोजीशन पे जब यहाँ पर सन आता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ सन इज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट. Exposed to the sunlight means whatever country is there in this region, है ना, will going to experience the summer.
ठीक है ना, समर। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इंडिया कहाँ पे है, ये कैंसर जा रही है, तो इंडिया कहीं पर यहाँ पर है, तो इंडिया में इस समय गर्मी हो रही होती है। एंड दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर 21 जून, सो 21 जून, है ना। एंड इंटरनेशनल योगा डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड 21 जून। हाँ, है ना। इंटरनेशनल योगा डे, खूब योगा करो क्योंकि दिन बहुत बड़ा है उस दिन। ठीक है, सो इंटरनेशनल योगा डे। एंड दिस इज बिकॉज वी आर स्टडिंग जियोग्राफी फ्रॉम आर परस्पेक्टिव, फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव। सो दिस इज द समर सोलिस्टाइज। समर, समर फॉर whom, समर फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये समर सोलिस्टाइज है, तो यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। when this movement occurs and the earth moves and comes at this position, तो यहाँ पर क्या होगा, now you can see this part is exposed to the sun, and this part means this is the north pole, दिस इज द नॉर्थ पोल, एंड दिस इज द साउथ पोल। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो साउथ का नीचे का जो इलाका है, यानी अंटार्कटिका का जो इलाका है, ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो एक्सपोज टू द सन। पर इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में ऊपर का जो पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट था, वो एक्सपोज था। So in this case, what will happen? There will be winter in the India. So hence it is known as the winter solstice. Winter solstice. So this is the winter solstice, and this is the summer solstice. Clear? नेक्स्ट ऑब्वियसली फिर आता है हमारा ऑटम और इक्विनॉक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट्स होती हैं ऑटम इक्विनॉक्स में, इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। ठीक है ना, इसको बोल देते हैं हम बेसिकली, क्या हो गया, ये हमारा स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। ठीक है ना, स्प्रिंग सीजन आ जाएगा 21 मार्च के आसपास। एंड दिस इज ऑफ द ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इन दिस टाइम क्या होगा, इन दिस टाइम इन द समर सोल्स्टिस, डेफिनेटली सन इज the sun ray is more exposed in the near the tropic of cancer, नियर दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इक्वेटर पे तो रहेगी, इक्वेटर में इट विल बी देयर, तो इक्वेटर में थ्रू आउट द ईयर वो रहती है। तो चेंजेस कहाँ पे होते हैं, चेंजेस होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन में। सो द चेंजेस हैपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन। ठीक है, सो इफ इट इज समर सो सन रेज आर मोर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर की तरफ मोर एक्सपोज्ड होंगी। सो डेफिनेटली द रेज आर मोर एक्सपोज्ड, सो द लेंथ ऑफ द डे विल बी मोर, क्योंकि भाई अब रे ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, और लाइट आ रही है, और लाइट ज़्यादा भी आ रही है, और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी आ रही है। सो रात वहाँ पर कब होगी, ओनली व्हेन इट रोटेट्स ऑन इट एक्सेस, रोटेट भी तो कर रहा है अर्थ। सो अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो व्हेन अर्थ रोटेट इन दिस डायरेक्शन, तब यहाँ पर जब ये वाला पार्ट जो इधर आ जाएगा, तो ये जब ये पार्ट पीछे चला जाएगा, इफ दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी, व्हेन दिस पार्ट ए मूव्स बैकवर्ड और बी आगे आ जाएगा, तब इस ए पार्ट पे अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, but in the summer solstice, the countries near the cancer are more exposed to the sunlight, and hence the length of the day is longest। ठीक है, और longer during this time। and longest कब होगी, longest will happen on 21 June, longest day, ऐसे बात करते हैं। ठीक है ना, longest day। उसी तरह 22 दिसंबर पे shortest day, longest night। क्लियर। बाकी लॉन्गर होगा, जैसे मान लीजिए कि जैन जैन की बात किया जाए, जैन पे, तो जैन में डे लॉन्गर स्टार्ट होना हो जाएगा, फिर उसके फेब में और लॉन्गर होगा, पर लॉन्गेस्ट कब होगा, जून में। ऐसा ठीक है, सो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग द सोलिस्टिस एंड द इक्विनॉक्स। यहाँ से क्या याद करना, विच इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द समर एंड विंटर सोलिस्टिस। ठीक है ना, और उसमें भी क्या क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन, दे कैन आस्क अबाउट द डेट। ठीक है ना, दे कैन आस्क अबाउट द डेट, दैट व्हेन समर सोलिस्टिस हैपन, 21 मार्च, 21 जून। ठीक है ना, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक, समर सोलिस्टिस में विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज एक्सपोज टू द सन, द पार्ट विच इज नियर द कैंसर, एक्सपोज टू द सन, वो इंडिया में गर्मी पड़ेगी उस टाइम पे। देन विंटर सोलिस्टिस वो कब आता है, नियर अबाउट दी 22 दिसंबर, है ना। इस टाइम पे कैप्रिकॉन के एरिया में वहां पर क्या होगी, वहां पर ठंड होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अर्जेंटीना हो गया हमारा, चिले हो गया, पैराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये आपका कैप्रिकॉन के आसपास आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी गर्मी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से चीजें यहाँ पर चलेंगी। तो सोलिस्टिस के बारे में देख लिया, वी गॉट द आइडिया ऑफ द समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस। क्लियर। समर सोल्स्टिस में क्या है, जो नॉर्थ आर्कटिक होगा वहां पर लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्या है भाई, यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे यहाँ पर आपको लाइट दिखाई पड़ेगी रात में भी। रात में भी क्या होगा,
सूर्य चमकेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज़ पता रही है। देखो क्यों होगा इसको बताते हैं। देखो ओवरऑल, जैसे इसमें देखो कैसे लिखा है इसको, एक कई कई सारी दस लॉट ऑफ द वीडियोज ऑल्सो, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट टू। यहाँ लिखा हुआ है कि समर सोलिस्टाइस पे क्या होगा कि नॉर्थ जो पोल होगा या नॉर्थ अटलांटिक होगा, इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। जस्ट सी सम वीडियोज टुडे आफ्टर द क्लास इन द यूट्यूब, है ना, कि हाउ द आर्कटिक ओशंस और आर्कटिक पोल्स जो होते हैं है ना, वो कैसे बिहेव करते हैं इन द समर सोलिस्टाइस। होता क्या है, लुक व्हाट हैपन इज कि इफ दिस इज समर सोलिस्टाइस, so during the summer solstice obviously sun exposed है, sun rays are exposed to this part, exposed है इस part में, ठीक है ना। so when this part moves from west to east, जब ये मूव करेगा तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है पार्ट ए, एंड इफ दिस इज पार्ट बी तो पार्ट ए पीछे चला जाएगा। ठीक, बट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस दिस पार्ट विल डेफिनेटली बी एक्सपोज टू द सनलाइट। ये जो पार्ट रहेगा, है ना, आर्कटिक ओशन का, ये क्या रहेगा, पूरा एक्सपोज रहेगा सनलाइट पे, डे के टाइम पे भी और नाइट के टाइम पे भी। इसीलिए क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है ना, यानी कि मिडनाइट में क्या हो रहा है, मिडनाइट में भी वहां पर सन निकल रहा है। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसलिए उसको बोलते हैं। वीडियोस बहुत अच्छी देखने का, देखना आप उसको। ठीक है, विंटर सोल्स्टिस में क्या होगा, overall the sunlight will fall on the tropic of capricorn, we know it, 23rd of December, sun never sets for the whole day at the arctic circle। ठीक है ना, आर्कटिक सर्कल में क्या होगा, सन नेवर सेट्स, यानी कि कभी भी सूर्य नहीं जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी। देखो अगर आर्कटिक सर्कल की बात है, दिस इज पार्ट ए ऑफ द अर्थ, दिस इज पार्ट बी। सो अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये ऐसे मूव करेगा। तो ए में क्या होगा, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, बी में लाइट रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि बी आगे आ जाएगा। बट दिस पार्ट दिस लोअर पार्ट विल बी एक्सपोज टू द सनलाइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है ना, रात में क्या होगी, रात में यहाँ पर लाइट होगी, यानी कि यहाँ पर भी सन कभी सेट नहीं होगा। इक्विनॉक्स समझ गए, इक्विनॉक्स क्या हो गया, वर्टिकल ओवरहेड रहेगा इक्वेटर पे 21 मार्च को, उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। दीज डेट्स आर इंपॉर्टेंट, जस्ट दिस मच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है ना। नाउ यू कैन सी दिस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस इज समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस, कौन सा है ये वाला? हुँ? कौन सा है, समर सोलिस्टाइस विंटर सोलिस्टाइस? टेल मी, दिस इज समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस? समर, ओके, दिस इज समर सोलिस्टाइस। ठीक है, समर सोलिस्टाइस कैसे पता, देखो सिंपल सी बात है। समर सोलिस्टाइस में क्या क्या था, in the summer solstice the cancer, tropic of cancer, है ना, this is exposed, the cancer is exposed to the sun rays, है ना, for most amount of time। ठीक है, and in the arctic region will be no sunset, sunset नहीं होगा आर्कटिक रीजन में, hence this इसको बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन मीन्स द सन विल बी देयर थ्रू आउट द डे एंड नाइट, विल नेवर सेट। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द समर सोलिस्टाइस। ठीक है, now we're going to talk about today we are going to start with the new chapter. So what we have done today, what we have done till now, we have studied about overall the the position of the earth, you can say। ठीक है ना, अर्थ की पोजीशन के बारे में। ठीक है ना, और ओवरऑल some basic concepts we have done। now we are moving to the part of the geomorphology। we are moving, this is the next chapter, very interesting and big chapter, not big chapter but हाँ interesting तो है काफी। the chapter is the geomorphology। ठीक, now this chapter है ना, if you have some sort of any sort of book, you can just also refer this chapter from that book, मतलब आप घर से पढ़ के आ सकते हो। और मेरे ख्याल से अभी आई डोंट थिंक सो कि the telegram channel or any dedicated channel has been made for you guys, but जैसे बन जाएगा definitely I'm going to share all these notes, some extra note questions and how to prepare, वो सारा कुछ I'm going to drop at that telegram channel। ठीक है, मेरे ख्याल से भी बनानी है, just let me know जब बन जाए। ठीक है, so this is it, this is the geomorphology। now talking about geomorphology, so geo means क्या होता है, the geo means the earth, morph, morph, Eliza, Eliza, you are late, try to be on time, Eliza। ठीक है, एवरीवन टर्न ऑन कैमरा, कोई कर ही नहीं रहा भाई, मतलब क्या ही चल रहा है। ठीक है, सो अर्थ,
जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ। दिस इज नॉट जियो, दिस इज नॉट जियो, नो जियो, ठीक है ना, दिस इज जीईओ, जियो, ठीक है ना, दिस इज नॉट जियो, ये जियो अलग है। दिस इज अर्थ, जियो मीन्स द अर्थ। मॉर्फ, MORPH, दिस MORPH, मॉर्फ, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, फॉर्म और शेप, ठीक। लॉजी, LOGY, this LOGY, logy means study. So what we are going to do in this chapter, we're going to study about what? We're going to study about the shape of the earth. Said that if the earth is of a certain shape, and or if the natural landscape of the earth is of a particular type, then why it is so? Why? What are the reasons behind it? ठीक? If let's say there's a landform, if there's a landform and the landform is very, if the landform, ठीक है ना, and landform is very slippery or very hilly, so why it is so? If there's a big mountain, है ना, if the Himalaya is there, then why Himalayas is there? ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। We'll talk about overall origin of the evolution of the earth and some more concepts we're going to talk about in the geomorphology. So overall, geo means the earth, morph means form or shape, and study of that is the geomorphology. Clear? Now, so here what we're going to talk about, we're going to talk about the origin and the evolution of the earth, ठीक है ना। Geological time scale, this is something which is very important, है ना, and some of the questions, couple of the questions has, अच्छा मुझे धीरे बोलना है, ठीक है, some of the questions or the couple of the questions has also been asked, ठीक है ना, in the past years, ठीक है ना, in from the section of the geography in the examinations such as the UPSC, state PCS, and whether other various other competitive exams. Next we'll talk about the interior of the earth, ठीक है ना। So basically talking about the interior of the earth, so the interior of the earth is composed or consists of lot of the materials, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात किया था कि इन द अर्थ देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अर्थ में क्या होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है, एंड दिस मैग्नेट, दिस कंपास गेट ऑलवेज स्टिक, टू द नॉर्थ एंड साउथ, to the north and south. So if I have a compass which always stick to the north and south, north and south, this means what? This means what I told you that day, that opposite pole attract each other. So if the opposite poles are attracting each other, if the opposite poles are attracting each other, this means what? This means there's a magnet. Now Earth also behave as a magnet, and very big giant magnet, very big giant magnet Earth behave as. Now, for any substance to behave as a magnet, what you need some material in it, ठीक है ना, कुछ आपको मटेरियल चाहिए ना, मटेरियल इन टर्म्स ऑफ some solid materials, for example iron you need, है ना, silicon you need, है ना, germanium you need, so these kind of material you need at the core of that material, and or at the core of that substance. So in the same manner, so we have the earth. Now in the inside the earth we have some materials, we have some materials, and these materials providing the or from these materials the magnetic flux is generating, है ना, which is generating the magnetic field, है ना। तो उसी तरह से फिर सारी मैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही, ये यहाँ से निकलती है, ठीक है, मैग्नेटिक रेज निकलती है, आप ऐसे मैग्नेटिक रेज, ठीक। अभी आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, you'll study about the northern light, northern light. Is anyone in the class knows about the northern lights? Northern lights, hmm? अरोरा, ठीक है, वेरी गुड। सो बेसिकली होता क्या है, चलो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देते हैं। सो वी हैव द अर्थ, सो दिस इज आवर अर्थ, इस अर्थ को नीचे लेके आते हैं। होता क्या है, सो व्हाट आई टोल्ड यू कि अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, ठीक है ना, एंड डेफिनेटली वी हैव द सन हियर, सो दिस इज आवर सन, ठीक है ना, एंड सन से भी क्या निकल रहा है, सन से भी निकल रहा है, वी हैव द रेज इज कमिंग आउट, एंड दीज आर व्हाट, है ना, ओवरऑल जो भी लाइट होती है ना, लाइट, है ना, ऑब्वियसली जो लाइट होती है द फोटॉन्स आर देयर, एंड इट द लाइट वर्क्स एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। जो भी लाइट होती है उससे जो रेज निकलती है वो कौन सी रेज होती है? इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और द ईएम रेडिएशन।
So electromagnetic radiation or the EM radiation emit from the sun, and this radiation comes in the contact of these magnetic fields. So ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हमने इसको बात कर लिया, ये भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, कोई तरह की फील्ड है, some rays are there, for example, some rays are there. So these electromagnetic radiation, when it comes on the contact of the rays, or overall the radiation, or overall the waves that are emitting from the earth, when they come close to each other, then they generate some sort of lights, and these lights are known as the northern lights. ठीक है ना? और ये नॉर्थ पोल में भी होंगे, साउथ पोल में होंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज इफ दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ ऑफ द अर्थ, देन दिस इज द मैग्नेटिक साउथ, ओवरऑल ये मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, एंड दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ. So the rays are emitting from both the direction, from the north and south also. Clear? And so the light that is generated, or the light that is formed, and this is very beautiful. Many people goes there in the northern hemisphere, है ना, or in the polar area, to just Greenland, Svalbard, to just see these lights. Very beautiful, है ना. Pictures देखना after the class, just see this picture, है ना. Geography is very beautiful. So these overall the rays that are generating in the northern hemisphere, उसको बोलते हैं, ये कौन है अभी भाई, यातर जी, यातर प्लीज बी ऑन टाइम. हाँ, anyone, the rays that are generated on the northern hemisphere is known as aurora is correct. पर ऑरोरा के बाद एक और नाम है ना, ऑरोरा. एनीवन? ऑरोरा किसने बताया था, वही बता दीजिए. हम्म. हम्म. ठीक है. तो बेसिकली नॉर्थ में क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हम बात करेंगे ऑरोरा, ऑरोरा बोरियालिस. ठीक. और साउथ में हो जाएगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस. ठीक. इस तरह से बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. एस जे बी ऑन टाइम. क्लियर? सो दीज आर द नॉर्दर्न लाइट्स, दीज आर द नॉर्दर्न लाइट्स. ये होगा नॉर्थ में, है ना. ऐसे याद करिए कि ओवरऑल नॉर्थ में बी आएगा, पहले बी आएगा, देन द ए विल कम. ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस यू कैन रिमेंबर द ऑस्ट्रेलिस विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज देयर डाउन देयर इन द साउथ, है ना, साउथ ईस्ट में है. तो उस तरह से यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, और यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. क्लियर हो गया? सो दिस इज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द. Then we will study about the rock formation, types of the rocks, and how the rocks are formed, why only the rocks are formed, and how we'll also see that what is the contribution of the rocks in the formation of the soils, or how the soils are formed from the rock only. ठीक है? So basically they are, this is a particular type of cycle, है ना. You can we have named it as the rock cycle. जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल ए फूड साइकिल, है ना, नाइट्रोजन साइकिल, है ना, सल्फर साइकिल. So in the same manner, nitrogen cycle, by the way, it is the most complex cycle. ठीक है? So in the same manner, we have the rock cycle. Next is the movement of the earth. So earth also moves, है ना. Overall we'll talk about the that how overall we'll talk about the Panthalassa Sea, है ना. Tethys Sea we'll talk about. Panthalassa Sea तो overall पूरा एक पेंजिया था, we'll talk about that ना, कि अर्थ में पूरा एक पेंजिया था. Then एक Panthalassa Sea था. Then continents move from each other, है ना, apart from each other, है ना. Then overall the in how the Himalayas are formed, Himalayas have been formed. So this was the Indian plate, है ना, and here was the Eurasian plate. बीच में this was the Tethys Sea, Tethys Sea. ठीक है ना. And slowly this Indian plate, so this Indian plate coming close to the Tethys Sea. Tethys Sea में जितने भी sediments थे, all the sediments of the Tethys Sea, है ना, they just lifted upward because of this Indian plate, and then this move in the southward, and this Indian plate got submerged under the Eurasian plate, submerged हो गई. ठीक है ना. तो हिमालय बना कैसा, अभी सारा बताऊंगा, पर अभी ब्रीफ दे रहा हूँ. तो हिमालय बना कैसा, तो हिमालय बना दो कारण से, बिकॉज ऑफ द टू रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो Tethys Sea था, Tethys Sea was having some sediments, because the Indian plate was moving, ठीक है ना, because the Indian plate was moving from here to here, and south to north. So all the sediments got uplifted because of the movement of the Indian plate. Next, the moment when Indian plate submerged in the Eurasian plate, तो obviously जब एक चीज submerged होगी तो दूसरी टूट जाएगी ना. When one thing submerged, if this is the, for example, if this is the Eurasian plate, if the Indian plate
if this is the Eurasian plate and this Indian plate is coming close to each other, so what will happen? The Eurasian plate will be uplifted, and this upliftment causes the formation of the Himalaya mountain. Himalayas are the young fold mountain. Aravallis are the oldest fold mountain of the world. ठीक है ना? And we'll also see there that overall we'll talk about that the even the Meghalaya was the part of the peninsula. This is known as the peninsular India. We'll talk about what is peninsular and these things we'll talk about in the later class, and we'll talk about the Malda Gap and these things we'll talk about here. So overall, when the Earth moves, ठीक है ना? Earth moves whenever the continents are moving from away or towards each other. So we have three theories: continental drift theory, sea floor spreading theory, and plate tectonic theory. Not very important. ऐसा कुछ detailed नहीं आता है ना? This is important from the point of view of the mains examination, or for example UPSC related है. But so we'll just go through it. Next, we'll talk about the endogenic process and exogenic process. Clear? Now, two things you need to understand. This is a very simple thing: Indo and exo. What is the meaning of Indo? Indo? Huh? Benjo, unmute yourself. Inside. ठीक है ना? Okay. Indo inside. And then what is then ओके ठीक है, इंडो इनसाइड हो गया. अभी एक और चीज पूछूंगा आपसे. इंडो इनसाइड हो गया, सो दिस इज इनसाइड. So all the forces or all the processes that are happening inside the earth is known as the endogenic process. For example, the volcanism, or this is also pronounced it as the volcanism or geomagnetism. No, geo is what? Geo is the earth, magnetism is the magnetic rays, है ना? और magnetic जो भी lines निकल रही from the earth. Then the earthquakes we have. Earthquake अंदर से तो आ रहा है, inside the earth. Tsunami coming from the inside. So these are the endogenic processes. Am I fast? मैं fast तो नहीं हूँ ना? Please just let me know. Fast तो नहीं हूँ मैं. Next comes the exogenic forces. So the forces that are happening, the forces that are happening, okay, or that are operating outside the earth, known as the exogenic forces. For example, the land formation. Clear? Two things I want to ask here: ex situ and in situ. Now, Eliza, tell me what is the meaning of ex situ and in situ. Eliza. Lucky. क्यों भाई आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? यू शुड रिस्पॉन्ड. लुक, डोंट वरी, यहाँ पे कुछ गलत होता है. वी आर हियर टू लर्न ना. You should participate in this teaching learning process. Good participation is needed. बताओगे ना चीजों किसे? Eliza, outer and inside. Very good, Eliza. ठीक है. So x is मतलब x क्या होता है? मतलब x मतलब क्या हो गया? जो चली गई है. ठीक है. अब जो चली गई है मतलब क्या हो गया? वो बाहर है, यानी कि पास में नहीं तुम्हारे. तो पास में नहीं तो क्या हो गया? इट इज आउटर. मतलब याद करने के लिए समझ सकते हो. इन मतलब जो अभी है इनसाइड, यानी क्या हो गया? दिस इज inside. Now these two words are very common from the point of view of the examination, in terms of geography also, in terms of environment also, or current affair also. Now how the question will be there related to these two terms. So the question will be there, for example, it will be there the ex situ conservation and in situ conservation. In situ conservation. So if we are conserving an animal or any creature inside its habitat, inside its natural habitat, that's known as the in situ conservation, which is very beneficial for him. For example, the in situ conservation could be. Now बताओ example in situ conservation. बोल के बता दो. एलिजा, you can speak also. लिखने में टाइम लगता है ना, इसीलिए. हाँ. किरोस, तासो, कोई बताएगा? कौन बताएगा? इन सीटू कंजर्वेशन एग्जांपल्स. तो इन सीटू में कंजर्वेशन में आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स इज देयर, और फॉर एग्जांपल तो नेशनल पार्क्स आ गया. ठीक. और बायोस्फीयर रिजर्व,
ठीक, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, और यू कैन से फॉर एग्जांपल कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, और कंजर्वेशन रिजर्व, और फॉर एग्जांपल टाइगर रिजर्व। ठीक, सो दीज आर ऑल दी इन सीटू कंजर्वेशन, उसी साइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देन व्हाट इज द एक्स सीटू? एक्स सीटू बहुत पूछा जाता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव वेंट टू द जू। जू में क्या होता है, लेके आ गया एलिफेंट को, तो एलिफेंट वाज नॉट द नेचुरल habitat, the zoo is not the natural habitat of animal, or for example the conservation, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर। सो क्रोकोडाइल्स आर नॉट नेचुरल हैबिटेट, उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो ब्रीडिंग सेंटर है, वहां से ब्रीड कराने के लिए आए हैं। या वेरी इंपॉर्टेंट इज द ग्लोबल सीड वॉल्स, या कोई भी सीड वॉल बोल दो, सीड वॉल, एनी सीड वॉल, ठीक है ना। और बोटेनिकल गार्डन, botanical gardens. So these are what? These all are the ex in situ conservation. Where is the global seed vault? Anyone? Very important. Global seed vault. Hmm? कोई बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, देखो दिखाती हूँ। Let me show you global seed vault. Global seed vault is there in the North Pole. North Pole के पास पड़ता है, North Pole के पास पड़ेगा क्या आपका? You will have the Greenland. ठीक, so this is your overall Greenland. ये ग्रीनलैंड पड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर डेनमार्क की टेरिटरी है, एंड दिस प्लेस इज नोन एज दिस सावलबार्ड, ठीक है ना, सावलबार्ड। सो यू कैन सी हियर दिस इज द सावलबार्ड, ठीक, दिस इज सावलबार्ड। एंड इन द सावलबार्ड, इन द सावलबार्ड, ठीक है ना, यू विल हैव देयर द ग्लोबल सीड वॉल। दिस इज, नो दिस इज सावलबार्ड, है ना, ये सावलबार्ड है पूरा, और यहाँ पर ये आपका ग्लोबल सीड वॉल्ट है। ये कहाँ गया, एक सेकेंड, दिस सेकेंड, this is global seed vault. So basically what is global seed vault basically? So in the global seed vault, uh, because it's very cold, so all the countries, all the participating countries have put it their seeds in the global seed vault. So if any mishappening happen, could be कुछ any uh, nuclear attack कुछ भी होता है, so all the seeds are protected here. So basically we can use these seeds in the later time, ताकि हम फिर से प्लांट को मतलब ग्रो कर सके, सारी चीजें कर सके। सो दिस इज व्हाट द ग्लोबल सीड वॉल लुक्स लाइक। ठीक है, दिस पर्सन इज स्पीकिंग समथिंग बट ही इज स्पीकिंग रशियन, बेबी यू डोंट नो रशियन, ठीक है ना। दिस इज द ग्लोबल सीड वॉल। इंडिया ने भी अपने सीड्स यहाँ पे रखे हैं। अच्छा, इंडिया में अगर ग्लोबल सीड वॉल्ट है कि नहीं है, टेल मी, मतलब देयर इज ग्लोबल सीड वॉल्ट इन इंडिया और नॉट? दीज आर द सीड्स। इज देयर ग्लोबल सीड वॉल्ट इन इंडिया और नॉट? अच्छा, होगा तो कहाँ पे रखेंगे, गर्मी में कि ठंड में? सेवल बार्ड तो ठंडी जगह है ना, कहाँ रखेंगे, ठंड में ना। तो ठंड कहाँ पड़ेगी, ऐसी जगह कहाँ पे है हमारे पास? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, लद्दाख में, तो हमारे पास भी ग्लोबल सीड वॉल्ट है, वी आल्सो हैव द ग्लोबल सीड वॉल्ट, इट इज देयर इन दी लद्दाख, ठीक है। तो एक्स सी टू इन सी टू कंजर्वेशन ही हो गया। अब हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर क्या है, हमारा टॉपिक क्या है ओवरऑल? दिस इज द जियोमॉर्फोलॉजी। इन द जियोमॉर्फोलॉजी दीज आर द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले क्या बात करना है यहाँ पे, फर्स्ट है इवोल्यूशन एंड द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है ना। एंड हियर आई विल टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो ओवरऑल हाउ वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का इंटीरियर कैसे है, ठीक है ना, ये हमें कैसे पता चला ओवरऑल, हाउ वी हैव गॉट, what is the source of the information? So basically the interior of the earth, the source of information is the source of information are the two. First we have some direct evidences, and second we have some indirect evidences, from which we have got overall that what is inside the earth, ठीक है, हमें तो पता करना है ना what is inside the earth. So there are two resources, first direct and second indirect.
Now direct can be, now what you can do, you can just directly drill inside the अर्थ के अंदर ड्रिल करो, ठीक है ना, और आपको पता चल जाएगा व्हाट इज देयर इनसाइड द अर्थ. बट व्हाट वी हैव सीन, we have done the deep ocean drilling, we have done the deep ocean drilling, but we are only capable to drill up to 12 kilometers, not more than that. महाराष्ट्र में शायद ये हुई थी, ऐसा कुछ याद है, ठीक है. तो ये वी आर एबल टू ओनली ड्रिल अप टू 12 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट. So this means this is not a viable way, this is not a viable way to find it out, है ना, that what is inside the earth. So in the direct source, the first source is not very much creditable source or viable source, है ना, to find out what is inside the earth. Next, what we have is the volcanic eruption. So it is quite simple. For example, you have eaten something, and now you are feeling like dizziness or vomiting kind of situation is there. Now, whatever you have eaten definitely will come out of your stomach. Clear? So in the same manner, if anything just erupt, ठीक है ना, if anything just erupt, if the earth is erupting itself, so it will definitely erupt what is there inside the earth only. ठीक है ना. So if in the during the process of the volcanic eruption, or during the process of when the moment the lava is coming out from the inside the earth, so whatever comes inside the earth will definitely give some of the information of inside the earth. जो भी अर्थ के अंदर से आएगा, definitely it will give some of the information regarding that. So volcanic eruption is the direct source of study the earth, that what is there inside the earth. Now talking about the indirect source, so we can compare the density of earth, that overall what is the density right now on the surface of the earth, and as we are moving inside the earth, what is the change in the density, and how drastically the density changes as we are moving inside the earth. So that could be one way to study the interior of the earth. पढ़ना क्या है हमको, स्टडी तो यही करना है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसे बना है. नेक्स्ट, seismic study. Now seismic, you this word you must have heard this word, ठीक है ना, सुना होगा आपने. Seismic, this is related to the earthquake. In the earthquake, we have the seismic wave. Seismic wave, जो earthquake की जो waves होती है ना, उसको बोलते हैं seismic waves. And the study of the seismic waves is the seismic study. So seismic waves or the seismic study, this tells about overall that what is there inside the earth. भाई earthquake कैसे आ रहा है, अर्थ के अंदर से तो आ रहा है ना. For example, if there are two plates, and let's say we have two plates, if this is one plate, ठीक, if this is one plate and this is the other plate, ठीक. Suddenly what happened, ये जो प्लेट है, ये जो इसके नीचे रखी थी, ये एकदम से क्या हो गया, इस प्लेट को, ये जो इसके नीचे थी, एकदम से ये हट गई, पीछे चली गई. और जैसे यहाँ पर थी, जैसे पीछे जाएगी तो डेफिनेटली ये वाली जो येलो वाली वो नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी थोड़ा सा. तो ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट हैज ट्रिगर्ड some the movement, this incident has triggered the waves. What type of wave, कुछ movement trigger करेंगे definitely, है ना. ये जो incident होगा, this will trigger some movement, and this movement will generate in the form of the waves. और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, this is only what we are calling it has the seismic waves, ठीक है ना. Next, overall the temperature and the pressure studies. So overall, what is the change in the temperature and pressure, है ना, as we are moving inside the earth. Clear? So from that change, है ना, after observing that change, we can also conclude, ठीक है ना, that how the earth is how earth behaves. सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रूम में बैठा हूँ, ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, इस रूम का मैं टेम्परेचर बता दूं, ठीक है ना, तो आप बोलोगे हाँ सर, मतलब अब मैं बैठा हूँ, तो ऑब्वियसली यू कैन गेट द आइडिया कि दिस रूम इज कंफर्टेबल फॉर सिटिंग एट लीस्ट. बट मैं कहूँ कि 100 मीटर नीचे एक रूम है, you will definitely ask what is the temperature of the room, sir. You will ask what is the temperature of the room. If I say the temperature of the room is, let's say for example 30 degrees Celsius, you'll say okay, then fine, then I can stay at that room, if even if it is there inside the earth 100 meters. Yes or no? So temperature also plays so if you know the temperature of the body, if you know the pressure of the body, why, by knowing these fundamental quantities, fundamental benchmarks, we can study about the nature of that body, the nature of the body. And what is the body here? The body is the earth,
ठीक है ना. नाउ इफ यू डोंट नो एनीथिंग, इवन दो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाउ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर चेंजेस. सो द थिंग इज there are two quantities which is very important, temperature and pressure, and we going to talk about these fundamental quantities. मैं शायद तेज बोल रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये मैं करूँगा. We going to talk about these fundamental quantities very often and throughout the session. Clear? So talking about how the temperature and the pressure changes, and for example pressure and density भी ले लो. Density, this is rho, this is known as the rho in Hindi. English is called the rho. मतलब वो रो नहीं, लाइन में रो नहीं है, बट दिस इज द सिंबल ऑफ रो. रो हिंदी में ऐसे रो, रो और रो. इफ यू डोंट नो उसके लिए बता दिया, बाकी पता होगा आपको. एंड दिस मीन्स द डेंसिटी. P for pressure and T for temperature. So what happen is, what is the normal case? Normal case बात करते हैं. Normal case. So normally क्या होता है, as you are moving, as you are moving, if let's say for example, if this is the surface of the earth, तो ये हो गया हमारा अर्थ का surface. So if anyone is moving, if this there's a person, ये यहाँ बैठा है, ठीक है ना, अर्थ से ऊपर है, और एक पर्सन यहाँ पे अर्थ से नीचे है. क्लियर? सो इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, और if you are moving above the earth at a particular height, the temperature will increase or decrease. Decrease. ठीक है. as you are moving away from the earth, the temperature should decrease. This is the normal conditions. कुछ special cases हैं, we'll talk about them later. अभी बात नहीं करना, क्योंकि these are the initial classes, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है. So as we are moving away from the surface of the earth, the temperature will decrease, or the temperature should decrease, I should say. The temperature should decrease. The pressure also should decrease. Now some people will have confusion. उसके बारे में बात करेंगे भी. Some people will have confusion that how the temperature decreases as the temperature decrease, how the temperature decreases, how the pressure decreases as the temperature decreases. एक मिनट. Just a minute. Did I said something wrong? हाँ सही सही, ये उल्टा बोल गया. सही है, अभी सही है. हाँ ठीक है. वेट. क्या मैं भूल गया. देखो, दो चीज़ें समझ लो पहले, ऐसे समझ लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अभी टाइम है हमारे पास है, इसको समझने के लिए दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको. स्पेस है हमारे पास है, तो दो तरह के सिस्टम है. एक हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा हमारा क्लोज सिस्टम. ठीक है ना, दूसरा हमारा क्लोज्ड सिस्टम. ठीक है. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम मतलब एक, यू कैन इमेजिन इट एज द प्रेशर कुकर काइंड ऑफ सिस्टम. कुछ भी क्लोज सिस्टम है. क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे. दीज आर सम मॉलिक्यूल्स. नाउ एज विल इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा? नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने में क्या होगा? ये जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ये ए है, एक मॉलिक्यूल ये बी है. आज आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डेफिनेटली इनको एनर्जी मिलेगी. दिस मॉलिक्यूल विल हैव सम एनर्जी, और ये दिस विल स्टार्ट मूविंग इन द zigzag मोशन, बहुत तेजी से मूव करेंगे. और जब बहुत तेजी से मूव करेंगे तो ये एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, पर ये कहीं भाग नहीं पाएंगे. वाई? क्यों नहीं भाग पाएंगे? बिकॉज द सिस्टम इज क्लोज. द सिस्टम इज क्लोज, एंड इफ द सिस्टम इज क्लोज, तो क्या होगा? ओवरऑल इनका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. ये सुनो, हैव यू गॉट इट? जैसे ही टेम्परेचर ने बढ़ाया, बहुत ज़्यादा तेज टेम्परेचर किया, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा भागेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, बट दे कैन नॉट मूव बियॉन्ड दिस बाउंड्री, hence the pressure will increase. So this is the normal condition. Clear? Normal condition for the closed system. Now what is the condition with the open system? In the open system, if
ओपन सिस्टम, तो ये क्लोज सिस्टम के लिए वी हैव द टेकन द प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जो था उसकी उसका एग्जांपल लिया फॉर द क्लोज सिस्टम। क्लियर? नाउ फॉर द ओपन सिस्टम, फॉर द ओपन सिस्टम वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक, ऐसे हम बात करते हैं स्पेस के बारे में बात करिए, स्काई के बारे में बात करिए। स्काई, इन द केस ऑफ स्काई, इन द केस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, एज विल इंक्रीज द टेम्परेचर, सो डेफिनेटली ये जो पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल सेम पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, ये पार्टिकल बी है ये वाला, दिस इज पार्टिकल ए, so the particle A and particle B will get some energy, definitely will get some energy, and as will increase the temperature, ठीक है ना, they will get the energy and they will start moving in a random direction, but in this case, in the second case, they have more space, तो जैसे इनको टेम्परेचर मिलेगा वो दूर 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 भाग जाएंगे। तो अभी अगर सपोज इनके बीच की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर 1 मीटर थी, व्हेन द मोमेंट आई हैव रेज द टेम्परेचर, तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी घट जाएगी? हाँ, इन हाँ, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बी बी भाग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी भाग जाएगा, नहीं और दूर चला जाएगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये भागेगा, सिंपल सी बात है। जैसे आपने देखा होगा पॉपकॉर्न बनाते हैं, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न बनाते हैं, तो जब पॉपकॉर्न बनाते हैं, व्हाट वी डू, वी टेक अ कुकर एंड वी टेक अ लिड, और उसमें पॉपकॉर्न डालते हैं, और जैसे ही पॉपकॉर्न डालते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो भागते हैं एक दूसरे, पर क्या होता है उस टाइम पे, दे कैन नॉट स्केप बिकॉज ऑफ द लिड, बिकॉज ऑफ द प्रेशर कुकर। पर अगर हम लिड को हटा देंगे तो क्या होगा, पॉपकॉर्न विल फ्लू अवे। इन द सेम मैनर क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द प्रेशर डिक्रीजेस। क्लियर हो गया बात? पर क्लोज सिस्टम में नहीं होगा, क्लोज सिस्टम में एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द प्रेशर इंक्रीजेस। हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे ये वाला पढ़ना है, दिस, ठीक है ना, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें ये वाला पढ़ना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्काई के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में एज विल मूव, और एज विल मूव अबव द अर्थ, द टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड द प्रेशर विल डिक्रीज। क्लियर? the temperature will decrease and the pressure will decrease. Clear? And as we are moving inside the earth, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर भी प्रेशर हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, कैसे बढ़ा देख लो ऐसे, सिंपल सी बात है, जब हम अगर हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग अबव द अर्थ, इफ यू आर मूविंग अबव द अर्थ, तो अबव द अर्थ जाने पे क्या होगा भाई, सन अपनी रेज कहाँ कास्ट कर रहा है, सन अपनी रेज यहाँ पे कास्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इन लेटर क्लासेस, बिकॉज ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ओवरऑल जो सरफेस का ओवरऑल वट एवर इज देयर इन नियर टू द सरफेस, वो हीट करेगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर उसका राइज होगा, बट एज विल मूव अबव द सरफेस उसका टेम्परेचर कम होगा। प्रेशर कैसे कम होगा, ठीक है ना, प्रेशर कैसे कम होगा, एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, जब एटमॉस्फेयर पास पास होगा, यानी कि ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तो नियर अबाउट 100 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज देयर अप टू 100 किलोमीटर, सो एज वी आर मूविंग अबव द एटमॉस्फेयर, तो जहां तक एटमॉस्फेयर होगा तो गैसेस बहुत पास पास होंगी, तो उसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, पर जैसे ही ऊपर मूव करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा उसका, लो हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे ना नेक्स्ट क्लास, इसको फिर से रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। नेक्स्ट, जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, तो अर्थ के अंदर आपको पता है एवरीथिंग इज इन दी मॉल्टन स्टेट, इनसाइड द अर्थ एवरीथिंग इज इन मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में है, टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर डेफिनेटली हाई होगा, एंड ऑल्सो द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड, लाइक क्लोजली पैक्ड है, फॉर एग्जाम्पल अंदर है क्या, रॉक्स है, रॉक्स, ठीक है ना, या लिक्विड है, तो रॉक्स लिक्विड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। Clear? So we'll definitely talk about these things in the later class. Then apart from these things, the next source is the meteorites. So apart from the temperature and the pressure, है ना, the meteorites is also the indirect source. What are the meteorites? Overall these are nothing just the rocky particles, ठीक है ना, और रॉक्स होते हैं, रॉक्स। तो स्काई में क्या होता है, स्पेस में बहुत सारी रॉक्स जाती रहती हैं, और ये जो रॉक्स अर्थ पे गिरती हैं उसको meteorite बोलते हैं, we'll talk about in later classes. And there is also one lake which has been formed because of this collision of this meteorite, क्या नाम है उसका, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, and which is also a Ramsar site, which is also a Ramsar site, Lonar Lake. So Lonar Lake, it is in the Maharashtra, which is also a Ramsar site. Ramsar site क्या होती है, the sites which are of the uh, culturally and naturally बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं,
है ना. दिस इज गिवन बाय द रामसर कन्वेंशन हुआ था. देयर वाज अ रामसर कन्वेंशन. रामसर कन्वेंशन. दिस हैपेंड इन द ईरान. ईरान इन द 1972. ठीक है, तो वहां पर रामसर साइट्स का डेजिग्नेशन दिया जाता है. ठीक है. So we are going to take a pause, and I'll going to most probably tomorrow, maybe there's a confusion कि आपकी क्लास होगी कि नहीं होगी because I have some work and some important work है ना. My mom is coming from the USA, so I need to go to receive her. So this is the reason. ठीक है. मोस्ट प्रॉब्ली कल क्लास नहीं होगी, मोस्ट प्रॉब्ली, बट इफ इट इज हैपनिंग तो आप क्लास में आएंगे. ठीक है ना, विल लेट यू नो. एंड द डे आफ्टर टुमारो मीन्स फ्रॉम मंडे. ठीक है ना, विल गोइंग टू हैव दी अदर सेशन और अदर थिंग्स, बाकी सारी चीज़ें करेंगे. वैसे हमारा जो नियम है, जो रूल है, वो देखते हैं. हम सैटरडे को करेंट अफेयर करते हैं, बट इस सैटरडे नहीं हो पाएंगी एज माई आई हैव टू गो टू रिसीव माई मॉम. शी इज कमिंग फ्रॉम यूएस. तो उसको भी देखेंगे. ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को हम करंट अफेयर करते हैं, बट है ना, दिस टाइम maybe it is not possible for for us to do the current affairs. So we'll start from the fresh Monday, and I hope to see you in the very next class of the current affair with the in the geography, and just go through this data, and I'll ask the sir to make a dedicated group for the you people. ठीक है, where I can drop all the important data messages and the MCQ questions that you can do better practice with. ठीक है ना. So just go and join the next class that you have aligned, inlined, and I would love to see you in the very next class of the geography. Till then, just take care. Goodbye. Thank you. This is Mohit signing off. जय हिंद, जय भारत. कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, जल्दी बता दो. नहीं है डाउट, ऐसे होगा नहीं. कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है, कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.